Hello everyone and welcome back to the channel, and I hope you guys are doing great. In my today's video, I'm going to discuss with you the Q1 FY27 result of TAC Infosec Limited. I know a lot of you guys were waiting for it. So please stay till the end of the video because I'm going to discuss the numbers and I'm going to discuss the reason why the numbers are so good. Okay. So let's get into it. If you just look at the numbers of TAC Infosec for Q1, right, the numbers are just amazing. Okay. It's just I was actually be very honest, quite surprised after what happened in the H2 of last year, and you know how the revenue didn't grow as per the expectation. So if you look at the number perspective, right, so I'll just get into that detail. So if you look from the overall revenue perspective, it increased by almost 96.8% from 10.2 crores last year to almost 20 crores this year. And it's not just about the growth in the revenue, right? If you look at the EBITDA margin also, right, that remained stable. So that means there was no increase in the overall cost. So there was no negative impact from that perspective. And if you look at the EBITDA as a number, right, that grew from almost 5 crores to almost 9.8 crores. That was almost a growth of around 97.1%. And if you look in terms of PAT, right, the company got a great operating leverage because last year they did a PAT of around 3.4 crores and this year they did a PAT of almost 8 crores, which is a growth of almost 137. And if you look at the PAT percentage also, right, that's where the magic happened, and you know the numbers look so good because last year they had a PAT margin of around 33.4%, but this year in the Q1 of FY27 they had a PAT margin of almost 40.21%. So that is almost an improvement of almost 6.87 percentage, and that's why they've got such a good operating leverage. Okay, so in terms of numbers, if you look, the numbers are great and they are doing what they have promised. Now we only need to continue monitoring the results to see how they're going to do in the coming quarters also. Now I'll get to the main points of the reasons why the sales was such high. Okay, so first of all, the first thing what the management told, right, because of what is happening in the AI segment, because of the AI boom, right, and it's merging with this cybersecurity, it has actually led to more growth of their main product, which is enterprise software, which they normally sell. So over here, what the management said in their, I'll use their quote, what they said. So then they call it this mythos moment, where the world of cybersecurity and frontier AI side decisively converge. So they merge together. So AI boom, which is happening in the overall world, right, has actually led to more demand for the cybersecurity products and everything, and that's what is helping. And what what TAC Infosec is doing, they're using these AIs, right, to improve the overall process and make a better product also. That is one important thing. So if we clearly see from this statement, right, so the majority of their sales happened from their main cybersecurity product, which is ESOF. So currently they have three main products. One is ESOF, one is CyberScope, and one is SOCify. So you might have seen my last video on SOCify, which they recently launched and how well it has been doing, right? So in terms of the other product, which is CyberScope, right, that did not grow that well. So that was a bit dampener, but it still did not impact the overall growth. So that clearly shows, right, that their main product, which is the ESOF, it's growing at a much higher rate. So, and one of the the management gave the reason also why the CyberScope operations did not grow much. So I'll just list down the reasons. So they said, right, so CyberScope is mainly used for in the cryptocurrency markets, right? So the reason that they said is like, because of the volatility in the global cryptocurrency market, that's what happened. Because at the back of it, right, whatever the Web3 projects happens, they did not happen. The token launches did not happen, and the smart contract audit which they do through this product, right, that also did not happen. So overall, because of the overall volatility in the global cryptocurrency market, it had a negative impact. But if you look at the overall for TAC Infosec, they still did quite well. But what the management said, right, that even though currently they face this issue, but they are taking CyberScope as a long-term opportunity, and they just don't want to be in the cryptocurrency part, right? So they are what they're trying to say, they want in the long term, they want to move from the cryptocurrency part to institutional blockchain security, smart contracts, assurance, and enterprise digital risk assessment. So what they're saying, even though the CyberScope has not done that great this quarter, but it has a huge potential, and they want to obviously, as they grow in this, they want to diversify it. And when the volatility in the global cryptocurrency market
reduces and everything, the revenue should increase. So that was the overall update. So if you look at it, right, the numbers are quite great because the sales have almost grown by close to around 97%. Profit has grown by almost 137. So all things are looking good. Now the only thing is, are they able to continue and execute this every quarter? Because that is going to be the challenge. Because last year H1 was quite good, but H2 was a bit challenging. So we have to see how it happens, right? And what the management says about it. So they will have a con call around 15th of July. I will try to attend it online. If not, then I'll wait for the transcript and definitely make a video on this, on what the management commentary is, what are the questions and what are they answering, right? And if you guys like this analysis, please do hit like and subscribe to my channel. Thank you and God bless you. So now the second part of the video, right, will अभी जो दूसरा पार्ट रहेगा वीडियो का, वो मैं हिंदी में बात करूंगा. जैसे मैंने आप लोग पहले ही बोल के रखा था, राइट, मेरे जो अभी से नई वीडियो आएंगे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊंगा. तो अभी आज की जो वीडियो है ना, हम उसमें टैक इन्फोसेक लिमिटेड के Q1 FY27 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. और आप प्लीज पूरी वीडियो के एंड तक वेट कीजिए, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो रिजल्ट आए इतने अच्छे क्यों आए, उसकी वजह क्या है और भी चीजें क्या हो रही है. तो एंड तक आप रुकिए. सो अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 97% बढ़ा. लास्ट ईयर उनका Q1 में रेवेन्यू था अराउंड 10.2 करोड़, बट इस साल उन्होंने ऑलमोस्ट 20 करोड़ रेवेन्यू किया. अगर हम उनका EBITDA भी देखेंगे, वो भी इंप्रूव ऑलमोस्ट 97% से हुआ. पहले 5 करोड़ था, ये साल ऑलमोस्ट 9.8 करोड़ हो गया. अगर आप उनके प्रॉफिट के बारे में देखेंगे, पैट नंबर्स के बारे में ना, उनको तो काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला. लास्ट ईयर उन्होंने अराउंड 3.5 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया था, बट इस साल उन्होंने ऑलमोस्ट 8 करोड़ का प्रॉफिट किया. जो काफी अच्छा नंबर है. उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि उनका लास्ट ईयर आप उनका प्रॉफिट मार्जिन देखोगे ना, वो अराउंड 33.33.4 के आसपास था, बट इस साल ऑलमोस्ट 40.21 हो गया. तो ऑलमोस्ट इसमें अगर आप देखो ना, ये ऑलमोस्ट 6.87% से इसकी बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला. तो ये भी काफी अच्छा साइन है. तो अभी अगर हम नंबर के हिसाब से देखेंगे तो नंबर सारे अच्छे हैं, राइट. आप इनकम ले लो, EBITDA ले लो, प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट मार्जिन ले लो, सब में इंप्रूवमेंट आया. अब अगर उनके आप रिजल्ट के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने मेन रीजन बताया कि ये इतना अच्छा ग्रोथ कहां से आया. तो उन्होंने क्या बोला, स्पेशली जो AI का बूम हो रहा है, राइट, उसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी का डिमांड है वो बढ़ रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये AI बूम की वजह से उनका जो मेन प्रोडक्ट है साइबर सिक्योरिटी का, जो ESOF है, उसकी डिमांड काफी बढ़ चुकी है. और मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि जिस तरह से AI की बूम आ रहा है और लोग AI को अडेप्ट कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड भी उतनी बढ़ रही है. और उनको लग रहा है कि ये कंटिन्यू होते जाएगा जब तक ये लोग AI अडॉप्ट करते रहेंगे. तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे चलता है. अगर हम कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, 3, तो ये पहला तो आता है जो इनका एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जिसको वो ESOF बोलते हैं. दूसरा आता है CyberScope और तीसरा आता है SOCify. तो यहाँ पे हमको क्लियरली मालूम है कि इनका जो मेजोरिटी रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो उनका जो एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है ESOF से आया हुआ है. अगर उनका दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे CyberScope, राइट, तो उस पर मैनेजमेंट ने क्या बोला कि उसमें इतना अच्छा ग्रोथ आया नहीं, और उन्होंने उसकी वजह भी दी. अगर आप उसकी वजह देखोगे तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोडक्ट है नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड है. तो अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी, काफी ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, राइट, जितने भी इनके जो Web3 प्रोजेक्ट्स होते थे CyberScope के लिए, वो काफी कम हो चुके हैं. जो टोकन लॉन्च होते थे वो भी कम हो चुके हैं. और जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इनका प्रोडक्ट रिव्यू करता है ऑटोमेटिकली, वो भी काफी कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ इतना अच्छा आया नहीं है. बट मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, राइट, इवन तो अगर शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम है, फ्यूचर में चीजें थोड़ी अच्छी होंगी. बट और उसके साथ साथ क्या है, वो क्या चाहते हैं कि ये जो CyberScope का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं रहना चाहिए, और वो दूसरी चीजों में भी जाना चाहते हो. तो उन्होंने बोला क्योंकि जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो उन्हें दिख रही है वो आती है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एश्योरेंस में और एंटरप्राइज डिजिटल रिस्क असेसमेंट में. और जो उनका जो तीसरा प्रोडक्ट है SOCify, आपने मेरा एक रिसेंटली वीडियो देखा रहेगा जहाँ पे मैंने SOCify के बारे में बताया था, वो जस्ट अभी बढ़ रहा है. तो उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थे. मेजोरिटी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो जो ESOF की तरफ से ही आया हुआ है. बट फ्यूचर में CyberScope और ये जो SOCify है काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर सब कुछ अच्छे से चलता है. तो इन शॉर्ट अगर मैं कंपनी के नंबर की बात करूं तो काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है. ऑलमोस्ट रेवेन्यू 97% के आसपास ग्रोथ, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 147% के आसपास से ग्रोथ, सब कुछ अच्छा चल रहा है. अभी यहाँ पर
एक ही चैलेंज है कि मैनेजमेंट को ये जो इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आपने उनका रिजल्ट लास्ट से देखा रहेगा तो H1 काफी अच्छा था, H2 इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से काफी सारे सेंटिमेंट थोड़े बिगड़ गए थे। बट अगर ये कंटिन्यू करेंगे अपने एग्जीक्यूशन जैसा से अभी कर रहे हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और इन्होंने इनका जो कॉनकॉल है ना वो 15 जुलाई को होगा अराउंड शाम के 5 बजे के आसपास। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अटेंड करूंगा, नहीं तो मैं उसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूंगा और उसके बाद भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट कॉनकॉल पे क्या बोल रहा है, उनका टोन क्या था, और क्या वो कॉन्फिडेंट है और फ्यूचर का प्लान क्या है, तो वो सब पे मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।